Hi guys, with this side, welcome to the journey phase. So a lot of you have been requesting us to come up with domain specific videos wherein we'll be coming up. The videos will be about tips and tricks, syllabus, and a lot more. So here I am with English language. So I gave CUET last year, and I was fortunate enough to score 100 percentile in English. That is a 200 on 200. So herein, I'll be telling you about the syllabus, last year's paper. I've also analyzed last year's 5 to 6 papers, and therefore here will be telling you what kind of questions actually come. And then I personally gave the paper tips and tricks and a lot more. Let's just get started with the video. Coming to the syllabus, they were so starting with comprehension, because majority of the paper, I wouldn't say majority, but a large chunk of paper was covered with comprehension wale questions. And what kind of comprehensions were there? Factual, descriptive, narrative, those kind of comprehensions. So there were around 17 to 18 plus questions from comprehension, जिसमें कि around 70% was very direct. आप देख सकते हो comprehension में आपको answers दिख रहे हैं. That simple. And the 30%, like the 70%, a student from class 8 can also solve it. But the 30% was a little bit on the trickier side, जिससे कि हो सकता है कि you'll have to think about it. तो जैसे कि there were questions on what do you think can be the title of the passage or something like that, wherein you'll need to give it a thought. So 30% वैसे kind of questions थे. दिस वॉज अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. नेक्स्ट पार्ट जो आता है जिसमें कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, और उसमें देयर बी अ हाइलाइटेड फ्रेज, जिसमें कि यू हैव टू स्टेट वेदर दैट हाइलाइटेड फ्रेज इज एन एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या क्या है. ऐसे काइंड ऑफ 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे काइंड ऑफ थे. Now I do have a paper with me right here, wherein ये last year का paper है, and ये one of the papers है जिसमें मुझे सारे kind of questions मिले. तो I thought of giving an example as well, wherein I'll be telling you कि कैसे कैसे questions थे. Just like I gave this example. So there was a question last year. The question says, once upon a midnight dreary, where I pondered, weak and weary. And इसमें जो है weak and very is highlighted, and the question is which poetic device is used, and there are options such as simile, alliteration, allusion, apostrophe. Now you need to choose. तो ऐसे kind of questions 3 से 4 around थे last year. Coming to the third part of questions कि और कैसे questions आए थे. तो third part of questions थे कि आपको पैरा पैरा दे दिया गया है, like first में एक पैरा है, second में एक है, third में एक है, fourth है, fifth में एक है. So all of this is part of one entire passage, and आपको जो है इसको rearrange करना है. इसी से there are 5 questions कि आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि फर्स्ट पैरा कौन सा हो सकता है, सेकंड कौन सा हो सकता है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी थे लास्ट ईयर, एंड ट्रस्ट मी, एक ऐसे पैसेज के क्वेश्चन से 5 डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी कि 25 मार्क्स, 25 इजी मार्क्स. आपको बस देखना है, ऐसे वर्ड्स चुनने हैं जैसे वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन थे. वंस अपॉन अ टाइम दिया है एंड वो थर्ड में दिया है, तो यू गेट टू नो कि ये जो है ये फर्स्ट होगा. कोई सेंटेंस एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर अ फैक्ट वी नो कि ये फर्स्ट में नहीं आ सकता. ऐसे काइंड ऑफ. आई डू हैव एन एग्जाम्पल विथ मी राइट हियर. तो इसमें जो था, फर्स्ट पैरा स्टार्ट हो रहा है दैट दोज रेट्स. ऑफ कोर्स वील जस्ट इग्नोर कि ये फर्स्ट पैरा ऑफ द पैसेज में नहीं आ सकता. द सेकेंड में लिखा है द स्क्रिप्ट वॉज ऑल्टर्ड फॉर द सेकेंड टाइम, ऑफ कोर्स नहीं आ सकता. थर्ड में सून आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, नहीं आ सकता. फिर लास्ट में जाके एक है कि ओवर 1200 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऐसे करके वी माइट गिव इट अ थॉट कि हाँ, ऐसे आप सिलेक्शन निग्लेक्ट कर करके एक करेक्ट आंसर पे पहुंचते हो, एंड दिस इज व्हाट
एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज्यादा ऐसे इजी क्वेश्चंस थे, यू डोंट इवन हैव टू गिव इट अ थॉट, आप पढ़ोगे एंड आपको समझ आ जाएगा कि ये कितने ज्यादा सिंपल है। ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। फोर्थ कमिंग टू द कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अप्रोप्रिएट वर्ड्स यानी कि करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स वर्ब्स एनीथिंग। तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी थे लास्ट ईयर। इफ आई कैन जस्ट गेट अ क्वेश्चन, I'll be giving it as an example. हाँ, ये जैसे question, I dash what was happening. The options are couldn't understood, couldn't understand, was not able to understood, was not able to understand. तो ऐसे kind of questions is what I want to say. तो इस टाइप के क्वेश्चन भी थे। idioms, phrases, antonyms, synonyms covered around 20% of the paper. Last year there were 50 questions and you had to answer a total of 40 questions. तो जो आपको थोड़ा भी 20% of the paper would be something that आप थोड़े से उसमें indecisive हो गए कि हमें इसका आंसर क्या हो सकता है। But trust me, 80% of the paper is very very easy. Just have to think about it and वो बहुत easily हो जाएगा। Last year a lot of students scored really great marks in English. फिर मैं बता रही थी idioms and phrases का। तो last year there were a lot of questions ऐसे मैच द फॉलोइंग में थे, जैसे कि एक मेरे पास एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन है जिसमें कि देर आर फोर इस साइड दिए एंड फोर इस साइड दिए। इधर में CI2I, पीस ऑफ केक, बिग फिश, ऐसे काइंड ऑफ। एंड इस साइड में ऑप्शंस है पीस ऑफ केक समथिंग वेरी इजी ऐसे करके। तो पीस ऑफ केक समथिंग वेरी इजी, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग। तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी लास्ट ईयर थे इडियम्स एंड फ्रेजेस से। फिर एक चंक आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी वोकैब स्लैश वोकैब ग्रामर कुछ भी बोल लो, वेर इन आर्टिकल्स, prepositions, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। And this is what is the syllabus, as in the syllabus is concerned. Coming to the resources, what resources I personally use these two books. I wouldn't suggest this one because I wouldn't suggest this one personally. I would suggest this book. This is something every student मतलब होता ही है, we everybody has this book, which is Ren and Martin. But if there's another book known as Student's Companion, if you can get that, that would be great. उसमें आपको हर एक वर्ड्स, वर्ब्स, idioms, phrases, हर चीज बहुत ही अच्छे से दी गई है। तो I would suggest कि if you can get that book, it would be great. Otherwise, go with Ren and Martin. इसमें भी सारी चीजें हैं। So the book I'm talking about, उसमें आपको verbs दे दिए गए हैं। जैसे let's say there's an example. What is the time? Dash your watch, and the options are at your watch, in your watch, by your watch, ऐसे करके। तो यू गेट टू नो कि अगर बाय आंसर है ना तो क्यों है आंसर। डायरेक्शन के लिए ये यूज होता है, टाइम देखने के लिए ये यूज होता है। सो यू गेट अ क्लैरिटी ऑन हाउ टू आंसर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ग्रामर में। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। टिप्स and tricks would be, I wouldn't say that you need a very very rigorous practice wherein like just judging on how last year का मतलब on last year's paper, but wouldn't say कि बहुत practice की जरूरत है। but yeah, try giving mock test जिससे कि you'll be getting an idea कि पेपर कैसा आता है and you'll be able to manage time. And एक idea is very essential before you go and attempt the actual paper. I guess that was all for the video. We have already uploaded general test wali video. If you haven't seen it, please make sure you watch that video. That is a very very informative video. We'll be coming up with more domains wale video. Thank you for watching this video. All the best.